Hey guys, and welcome back to ICSE Topper Talks. Today we're going to be talking about how you don't need perfect English to score 95 plus in your board exams. आपको चाहिए एक सही और followable strategy जो आज मैं लेके आ गई. So please make sure to watch this video till the end and comment any questions down below. Just to prove my authenticity, I am just telling you guys that these are my approximate scores for the board exam, and I am going to be sharing my actual result very soon when the results do come out. By the time that this video is being recorded, they are not out yet. ये वीडियो मैं क्यों बना रही थी बिकॉज मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें आई शेयर द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग क्लास 10th. तो आई डिड नॉट वांट यू टू मेक them in English in any subject. There's general mistakes there were. So this time I'm trying to give you the actual strategy that I followed. I broke it all down step by step so you can follow it and get the best marks. So सबसे पहले I'm going to talk about the biggest myth about scoring high in English. बच्चे क्या करते हैं? They prefer to memorize answers rather than learn. Memorization is good, but memorizing answers word to word से आपका कुछ नहीं होगा. CISCE does not reward you for learning memorizing of the entire book. Even if you write the word to word thing from the book, if you write the correct dialogue from Julius Caesar and it does not align with the requirement of the question, then you're not going to get marks. So don't memorize, just don't blindly memorize. Reality mein, in English literature, you need to have rich textual and conceptual understanding so that you can frame a fresh keyword rich answer. मेमोराइज आंसर्स के साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी आंसर्स कैन यू मेमोराइज? आपके पास ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट्स है, तो यू कैन नॉट मेमोराइज सो मच इंफॉर्मेशन. तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, द प्लॉट लाइन, द कैरेक्टर स्केचेस. These are very essential things that you must know. For instance, for prose and poetry, character sketch, storyline, how the story moves, then moral of the story if there's any moral, central theme, and the figures of speeches. For drama, character sketch is very important, and setting, um and any kind of dilemmas, key events, stuff like you need to understand what prose works like or what poetry works like, and then you need to tackle it accordingly, right? Now let's talk about the core strategy. The four pillars. Every time I wrote my answer, I used to think about these things. First thing is the keywords. You must be aware of the keywords. While your teacher is teaching or you're watching from YouTube, please make sure to underline the keywords because those are very important and that is for what you are rewarded by the CISCE in your board answers. And themes. You must understand the central theme of any story so that you can anchor any answer. Very basic. Multiple sources. Please do not rely on just your school teaching or just reading the textbook. You must also try to study from YouTube, from the school, try to do it by yourself. Right? Online references and your workbooks, if you have them, those are very helpful. These lead to a deeper understanding. Now, do not try to recall memorized lines unless you are very good at it. You might memorize specific phrases, but the entire words and answers, those are too much. So frame your answers on the spot. Never try to recall memorized lines, and you might even mess them up. Construct your answers freshly with clarity in your mind. Now, this was what I did, how I studied. So I used to underline the keywords. I used to use them in my answers. For instance, I'm writing about Brutus. So I would mention that Brutus was a honorable character and he was very patriotic and loved Caesar deeply. So you see how I weaved the keywords into my answers naturally. Then I definitely see my main studying for English was not based on school. I did not get any kind of understanding from school. So I studied online to understand YouTube,
See, there are multiple good channels that I would suggest, like Study with Sudhir, ICSE wala Nupur ma'am. These are very good channels, like people whom you can refer to for the course, right? And workbooks are also good, but do not rely completely on the workbook information. For see, there are certain instances where you need to cross reference with your teacher, with from the school. Some things are wrong. So school is important, your teacher is important, because at the end of the day, those are the people who have knowledge about the CISE and their rules and regulations. But you must also from your part try to work towards a better future. नाउ अब हम बात करते हैं फोकस एरियाज की. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, कैरेक्टर स्केचेस, सेंट्रल थीम्स और मॉरल्स पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये हाई वैल्यू जोन्स हैं. नाउ ये है एक आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर दैट वर्क्स. हर स्ट्रॉन्ग आंसर एक क्लियर आर्किटेक्चर फॉलो करता है. इफ यू गाइज वॉन्ट, आई कैन क्रिएट एग्जैक्ट आंसर राइटिंग वीडियोज, बट दोज विल बी डिपेंडेंट ऑन द demand of the channel. I made a mistake over here where I wrote 70 mark answer and a full mark answer. I meant like 70 mark answer sheet from a full mark answer sheet, right? I missed the word. So first you must give an introduction, and then you must give your body, and then you must give a conclusion. अभी मैंने आगे एक जगह answers लिखे हैं, तो मैं उससे आपको ये चीज़ compare करके दिखाऊंगी just in this video, so you can understand what I'm exactly talking about. The art of answer writing मैं आपको अपने channel पे बहुत अच्छे से सिखाऊंगी. There are channels on the internet who have provided answer writing videos, but at the end of the day, they do not tell you how to write. So don't worry, you got me. Now, let's talk about what separates good from great. Strong grammar, clear expression, and minimal errors. और ये तभी possible है जब आपको बेसिक्स आते हो. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, करेक्ट टेंसेस, पंक्चुएशन, बहुत बेसिक्स जो ऐसे तो लगता है इट्स नॉट वेरी नोटिसेबल, बट एग्जामिनर्स देखते हैं. एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए. फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करनी है. दिस इज समथिंग I'm gonna show you further in the answer that I have written for today. And minimal errors. राइटिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में अगर थोड़े से ग्रामेटिकल एरर हो रहा है तो दैट्स फाइन. Like one error, for instance, you're writing and in a flow you write this character questioned this character, so the first one replied saying. Now here the grammatically it should be replied by saying, but by chance in the flow you missed the word by. So when the examiner is going to read your answer, they're not going to deduct marks for it because it's not the problem. But if you make very big errors, like very noticeable ones, like you make spelling errors or grammatical errors, so that will create a pattern in the mind of the examiner, and they're going to check your copy very thoroughly, and that is something that you don't want. So please, I would prefer कि आप हमेशा आखिर के 5 मिनट में, 10 मिनट में, whatever time you want to allot, proof reading के लिए रखें. अब मैं बात करती हूँ लैंग्वेज सेक्शन के बारे में. अभी तक हम लिटरेचर की बात कर रहे थे. सी, दीज थिंग्स स्टैंड फॉर बोथ लिटरेचर एंड लैंग्वेज, बट नाउ we're just going to talk about the difficult sections of language, that is the composition and the presse writing. Otherwise it's very basic. For composition you need clarity over complexity. आपकी जो लिमिट है, आपको लिमिट को फॉलो करना है. अप्रोक्सीमेट 2.5 to 3 pages, 2 to 3 pages you can write, but it is preferred to write towards 2.5. 2.5 is the ideal limit. You just need to master the type of composition you're going to attempt. मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ. शुरुआत से आपके पास 4 एग्जाम्स होंगे. You think from the beginning that which composition you have to do. आप फर्स्ट एग्जाम में अगर आपको कोई करने का मन करा, you can make a एटलीस्ट मतलब फर्स्ट 2 एग्जाम्स में अगर आपको कोई भी चांस लेना है, लाइक एडवेंचर टाइप करके करना है, तो यू कैन ट्राई डिफरेंट वंस. बट फर्स्ट प्री बोर्ड तक आपके दिमाग में होना चाहिए. फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड में आपको जो बोर्ड में अटेम्प्ट करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन, वही अटेम्प्ट करें. बी इट आर्ग्यूमेंटेटिव, नरेटिव, स्टोरी राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव. प्लीज डू नॉट एवर अटेम्प्ट द पिक्चर कॉम्पोजिशन.
अब आते हैं प्रेसी राइटिंग पे. प्रेसी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी प्रेसाइज एंड प्रैक्टिस, सॉरी, एंड रिक्वायर्स प्रैक्टिस. So identify the central idea of the passage, strip examples and rewrite in exactly one third of the total count. दिस इज जस्ट लाइक फॉर योर माइंड कि आपको इतने छोटा करना है, इससे आपका दिमाग काम करेगा, वरना अदरवाइज तो द प्रेसी लिमिट इज 50 वर्ड्स. So they do accept 49 and 51 as well, but your goal should be, if you follow the grid system, to write exactly 50. Otherwise 49 to 51 works, right? Now दोनों sections, remember, दोनों sections आपके intention पे रिपोर्ट करोगे, नहीं करेंगे. So what am I even saying? दोनों sections आपके answers with intentions पे रिवॉर्ड करेंगे, ज्यादा लिखने वाले answers पे नहीं. Now here is what I was telling you all about. This is a weak answer versus a strong answer, which is personally written by me. I think I wanted to highlight a few words, but I failed. But anyways, I think I forgot basically, but I'll show you. Let's see the weak answer first. Achha, keep it in your mind that these are same questions by the same student. Difference ये है कि उन्होंने कैसे आंसर को, मतलब सेम क्वेश्चंस बाय द सेम लेवल स्टूडेंट्स, डिफरेंस ये है कि उन्होंने कैसे अपने आंसर को फ्रेम किया है. सो फर्स्ट, the question must be regarding Act 3, Scene 2, or maybe it must be regarding Brutus in general. So the first answer is Brutus is a good person. He loves Rome and kills Caesar for the people. He is honest and speaks to the crowd. आप इसको देखिए, it's very generic, no keywords, no theme reference. इसमें से एग्जामिनर को क्या मिल रहा है उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Please, whenever you're writing the answer for Julius Caesar, for drama in general, you must keep in mind आपको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को तो स्टोरी पता ही नहीं है. Then only you can achieve that sense of good marks, कि आपको पता होगा कि हमें marks तो आएंगे. Strong answer आप देखिए, मैंने जैसे बोला था, Brutus, how? Brutus is portrayed as an honorable yet idealistic character. Keyword, honorable and idealistic. I always used to write this. Brutus is like whatever character is showed as from the beginning, it is portrayed as like that. I always used to write it. राइट आपको पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है शुरुआत में. हु प्लेसेस हिज लॉयल्टी टू रोम अबव पर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे उनकी पेट्रियोटिज्म दिखाया. अब आई ऑल्सो यूज टू मेंशन द एक्ट एंड सीन. मैंने आंसर एकदम अपने तरीके से लिखा है, हाउ आई यूज टू राइट होम एग्जाम्स में. एटलीस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द बोर्ड्स फॉर द मार्क्स, बट फॉर द होम एग्जाम्स, in the home exams, the difficult ones, I scored between 70 to 75 throughout the 4 ones that I gave in school. So you can see, like out of 80 I'm talking about. So you can see my authenticity. So right, mention करिए specific जहाँ से आप example दिए उसकी बात का. So you can just read the answer and you can see how different it is. एग्जामिनर्स को क्या मिल रहा है, कीवर्ड्स मिल रहे हैं, थीम लिंकेज है और स्ट्रक्चर्ड थॉट है. मैंने आपको जैसे आर्किटेक्चर बताया था, पहले तो एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी है, यहाँ से बॉडी है, राइट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, यहाँ से बॉडी है और फाइनली यहाँ से कंक्लूजन है. सो दैट इज द परफेक्ट वे टू राइट योर आंसर. So you need to think like the examiner, और आपको अपना आंसर उसी तरीके से लिखना है. The examiner who will be checking your copy would not know what student from what school he's checking copy of. So you need to make your impression by your copy. फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि एग्जामिनर्स थके हुए होते हैं, वो बहुत सी कॉपीज बहुत कम पैसे के लिए चेक कर रहे होते हैं. तो एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड आंसर ऐसे ही स्टैंड आउट करता है. देखो, एक ही क्वेश्चन के बारे में वो कई आंसर्स देख चुके हैं. आपका आंसर अगर कीवर्ड्स के साथ होगा, थीम के साथ होगा, तो उनकी अटेंशन ऐसे ही गेन करेगा और वो देख के खुश हो जाएंगे एंड देयर गोइंग टू गिव यू मार्क्स. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑल्सो, सॉरी, सेकेंडली स्ट्रक्चर सिग्नल्स इंटेलिजेंस. एक अच्छा आंसर ऑब्वियसली एग्जामिनर को बताता है कि आप जो भी कह रहे हो इट्स गुड, आपके पास प्लॉट है, आप करेक्ट लिंकेज कर रहे हो, तो उनको समझ में आएगा कि ठीक है ये बच्चा अच्छा है. अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है, इवन इफ यू आर मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स, लेकिन आपने लिटरेचर के सही आंसर्स लिखे हैं, तो एग्जामिनर समझेगा कि ओके दिस चाइल्ड इज गुड. लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी इन प्रेसी, इन ग्रामर, अगर आप लिख रहे हो करेक्ट आंसर्स, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो एटलीस्ट दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द इंटेलिजेंस इन यू. एंड थर्ड, मेमोराइज कुछ नहीं करना है, बस समझना है और लिखते जाना है. दैट्स द एंटायर स्ट्रैटेजी इन वन लाइन.
इस पूरे टेक्स्ट को इंटरनलाइज करिए, फ्रेम योर आंसर एंड ट्रस्ट द प्रेपरेशन. अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो for more ICSE strategy videos. New uploads every week and multiple in the week. So please make sure to stay tuned. Share this video with peers. If you want further videos, you can just comment down